एमपी से। कौन सा गांव? खंडवा। और तेरा नाम क्या बताया? हसन। हसन। हसन नाम बताया ना? हसन। पिताजी का नाम? सलीम। सलीम। पिताजी का नाम सलीम। और कितने भाई बहन है? भाई। हाँ बहन। बहन, एक बहन है छोटी। छोटी। और भैया दूसरा है? छोटे। छोटा भाई है। हाँ। और एमपी का ना खंडवा, खंडवा गांव है। खंडवा गांव है ना? तो यहाँ गुजरात में कब से आया? हाँ। आज आया के पहले आया था? आज ही। और कौन से व्हीकल में आया? ट्रेन में आया, गाड़ी में आया? स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। रेलवे में आया? टिकट कटवाया था? नहीं कटवाया था। हाँ। अभी खाना खाया इधर? कुरकुरिया खाया ना, बिस्किट कुरकुरिया बलदेव भाई दुकान पे। हाँ। तो अब कहाँ जाएगा? अंधेरा हो गया। हाँ, खंडवा जाने का अंधेरा हो गया। कहाँ से जाएगा तू? तो वहां से क्यों इधर क्यों आ गया? पिताजी को बताया था? नहीं बताया था। હવે આ એમપી થી ખંડવા બોલે છે, ખંડવા ગામ થોડું થોડું બોલી શકે છે। અને એમપી ના ખંડવા ગામ થી આવેલા ભાઈ છે, એનું નામ હસન બતાવે છે, પિતાજીનું નામ સલીમ બતાવે છે। એક ભાઈ છે, એક બેન છે। હાલ બજરંગપુર વેરતિયા ગામે છે, તાલુકો જિલ્લો જામનગર। બજરંગપુર વેરતિયા ગામે કોઈના પરિચિત હોય, કોઈ જાણકાર હોય તો એમપી સુધી ફોન કરીને જાણકારી આપવા, આ પ્રભુજીને એની જગ્યાએ પહોંચાડવા। એના માતાજી પિતાજી એને શોધતા હશે તો એની પાસે પહોંચાડવા આપ સૌને નમ્ર વિનંતી। આટલું એક પ્રભુનું કાર્ય છે, તો બધા સહકાર આપશો, મદદ કરશો। અસ્તુ। ભારત માતા કી જય। શેર કરો।